आप फिलहाल कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स देखते हैं एंड हाउ इज योर वीकली कैलेंडर लाइक? मोस्टली मैं सेल्स, मार्केटिंग, CRM ये डिपार्टमेंट देखती हूँ. दोज डिपार्टमेंट्स वो डायरेक्टली रिपोर्ट टू मी. अदर देन दैट टैलेंट और कुछ पार्ट्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग एंड अदर डिपार्टमेंट्स आर मेजरली रिपोर्टिंग टू मी. अदरवाइज मेरा काम अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगी प्लेसिंग द राइट पीपल एट द राइट प्लेस इज माई वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. See, I mostly work on a very strict calendar. Okay. So my working day starts at 11:30 in the morning, and the week is divided into taking reviews of all the departments that report to me. Starting on Monday, we have CRM and the post-possession review. So post-possession also we have a department called Hamesha Aapke Saath. So that review happens on Monday. And then there is our internal discussions that happen, between the leadership team in the evenings. And then Tuesday it's sales and marketing and pre-sales. So we have all these three departments in-house. My Wednesdays, it is focused on operations and interior designing. Then Thursdays, I go on any of the sites. And Fridays, I spend time on talent, that is HR and its aspects, and also meeting agencies like marketing agencies and digital agencies. The second and fourth Saturday, we have off. So if there is any client meeting or any other meeting at sites, I go on sites. Otherwise, head office में जो भी कुछ रहेगा ऐसे day to day का काम और approving, invoices and all those things happen on Saturday. All approvals and all. ERP also is reporting to me. So ERP, IT, उनका review वगैरह होता है तो then I keep it on Saturdays. ओके. Yeah. सो आई गेस ये एक काफ़ी हद तक एक प्रॉपर एक एक्टिव रोल है. इट्स नॉट जस्ट पैसिव रोल क्योंकि घर का बिजनेस है तो अपन आ रहे. सो इट्स प्रीटी मच ऑफ एन एक्टिव रोल. एंड घर का बिजनेस है तो उल्टा ज्यादा एक्टिव रोल है. एब्सोल्युटली. बिकॉज घर के लोग ही नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोगों को कैसे करवाएंगे. सो वी हैव अराउंड 225 पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली ऑन आवर पेरोल. सो अक्रॉस ऑल द साइट्स दैट वी हैव एंड ऑल्सो इन हेड ऑफिस. So to make so many people work, we ourselves have to, be on our toes. That's what we feel. And talking about systems, since you asked this question of, how do you have these systems in place? Because of systems, you think that we have grown to this scale. Definitely. I have read a book, Atomic Habits. I know all of us must have read that book. It's a very, very popular. उन्होंने पढ़ना चाहिए. Of course, it's a very, very popular book. It stresses on the small habits leading to larger success. Definitely, but then there is one part in the book which I remember is you don't rise to your goals, you fall to your systems. Wow. So अगर system हमारे सही नहीं होंगे तो then जितना हमारे system का level होगा that is where you can rise up to. That's the thing, not up to your goals. Goal रहेगा वहाँ पर, system रहेगा यहाँ तो then हाँ. So everything will fall back to the system. तो system जितनी ऊपर है उतने ऊपर आपका. Exactly. नहीं तो सपने ही रह जाएंगे. ये जो बाउंड्रीज जो एकदम इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. सो वी हैड एन इंटरेक्शन विद योर टीम एज वेल. सो एवरीवन इज वेल अवेयर कि मीनाक्षी मैम कौन से दिन कहाँ पे आप उनको देख सकते हो. वो कहाँ पे कौन से रिव्यूज कौन से रिपोर्टिंग मीटिंग में रहेंगे. सो आई बिलीव एक टीम के लिए भी काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड तरीका मिलता रहेगा इस चीज़ से. उनको भी क्लैरिटी मिलती रहेगी. सो हाउ डू यू इंश्योर कि ये सिस्टम्स आप एकदम स्ट्रिक्टली आप फॉलो ही कर पा रहे हो फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स एंड इसमें शफल्स नहीं हो रहे हैं? See, one, it is not a strict schedule, first of all. It's a very relaxed schedule if you look at it in that way. Everything is fixed on a certain day. So that लोगों को भी easy है to recognize कि what I am going to do on that day and how much of my availability is there on that day for these guys. For example, CRM knows that if they want to interact with me on any approvals, anything that is, pending for me to handle or any decisions that are to be taken, they know Monday is the day. And Monday we set our targets for the entire week. We know what our map will look for this entire week. So there is no dependency on me. It's easier for them to work. Of course I'm available. बाकी दिन भी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी अगर मुझे कोई CRM का बंदा कॉल करेगा तो मैं नहीं बोलूँगी मैं बात नहीं करूँगी आपसे. Of course I'll talk to them. But then everybody is so sorted out ना कि questions are fixed, review formats are fixed, everything is fixed. किसी को कोई confusion नहीं. Actually it's a very relaxed system that we follow. It's not a strict system. It's not a strict system. In fact, I love to interact with people when I go on sites and all. I love to talk to them. But they should be set कि इस हफ्ते हमको ये काम करना है. These are some non-compromisable things that we have to do in this week. वो अगर हमारा set है तो फिर then बाकी interactions हो सकते हैं.